Good evening, students. Today's topic is technique of manpower forecasting. So there are a number of techniques which are applied in our corporate world in order to forecast the future manpower requirement, and we will discuss one by one each one of these. So forecasting workforce need, the organization strategic plan. Strategic means something related to forthcoming future. आने वाले समय से रिलेटेड कोई भी प्लान उसे स्ट्रेटेजिक प्लान बोलते हैं. एंड अलाइड बिजनेस प्लान, और जो इसके अलावा जो एडिशनल बिजनेस प्लान है, प्रोवाइड अ गाइडेंस एज टू द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड. सो जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान्स हैं, लेट्स से डाउन द लाइन 4 months, 6 months, 1 year after, whatever the organization wants to do, whether they wants to go for expansion, whether they wants to go for downsizing, accordingly forecasting can be predicted. That after 1 year, let's say they are going for expansion, so capacity has to be estimated accordingly according to the production capacity. We can predict that आने वाले 1 साल में हम इतने एडिशनल लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी हम प्लानिंग कर सकते हैं. तो फोरकास्टिंग बेसिकली बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक प्लान और द अलाइड बिजनेस प्लान. यानी अलाइड का मतलब जो एसोसिएटेड बिजनेस प्लान्स हैं या कोई बदलाव किए जा रहे हैं बीच में बिजनेस प्लान है, उनको हम अलाइड बिजनेस प्लान कहते हैं. तो आने वाले समय के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान और अलाइड बिजनेस प्लान को कंबाइन करें, तब हम एक प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि हाँ, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स इन द फोर्थकमिंग फ्यूचर. What are the reasons? These are the reasons. In the next point, expansion of capacity to produce goods or provide services, whatever is the case. So expansion, definitely forecasting workforce need is needed in order to predict these things. So if there is an expansion, naturally we can forecast accordingly, but we should know what is the level of expansion. Then retrenchment, if it is already planned, then we can say that these are the people, number of people, those will be taken out of the organization or will be retrenched. And obviously it seems that the organization having excess of staff. Similarly, new product or services being launched, so accordingly the type of people required to produce these kind of goods and services which are new or with the latest technology they are being produced. So accordingly we have to forecast, we have to estimate for those kind of people, those who can manage this kind of technology. Introduction of new technology, this is related to new products only. Generally, wherever there is a new product, it may or may not bring a new technology. But of course, there are chances with the advancement of technology, new products are also being launched. So introduction of new technology will require people, those who can manage that technology, and accordingly workforce need can be forecasted. Then entrance of new competitors in the market. Now this is very important because market is full of competition. There are all kind of competitors in every segment of the product. So naturally, if there are new competitors in the market, so we have to make an estimation, right? And accordingly we have to make our own business strategy. And while we are formulating our new business strategy, keeping in view our new competitors, we may require certain specialist kind of people to manage the business. So competitor पे निगाह रखनी बहुत ज़रूरी होती है. Then economic conditions के boom period है या down slide चल रहा है. Naturally down slide होगा, economic conditions अच्छी नहीं होगी. जैसे आप for example कोविड का टाइम देख लीजिए. During COVID time, most of the, because there is less demand in the market, as a result most of the companies have downsized, they have retrenched people, they have gone for, because of the economic condition, they know they cannot go for the full kind of production, full level of production. Naturally they will retrench people. So accordingly we can plan that earlier we were requiring 200 people to run our organization, now we require only 100. So economic conditions also determine the forecasting factor. Workforce need is made and estimated accordingly. Then employee retirements, how many people are going to retire, let's say within next 6 months. So how that gap has to be filled, that vacant positions are to be filled. So that planning becomes a part of the forecasting. Then workforce turnover,
वर्कफोर्स टर्नओवर रेट इट इज कॉल्ड, राइट. टर्नओवर रेट क्या होता है बच्चों, कि हाउ मेनी पीपल आर कमिंग एंड हाउ मेनी पीपल आर exiting from the organization. That is called as manpower turnover or workforce turnover. ठीक है. The rate of turnover rate बोला जाता है कि मान लीजिए एक महीने में 10 जने छोड़ के जा रहे हैं और 8 जने आ रहे हैं, तो इस टर्नओवर रेशियो को हमें मैनेज बहुत अच्छी तरह करना होता है, क्योंकि ये एक इंडिकेटिव होता है कि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो रही है या सरप्लस हो रही है. वर्कफोर्स टर्नओवर एक बहुत टेक्निकल चीज होती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे वी कैन एस्टिमेट वेदर देयर इज अ शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मैन पावर एंड सो फोर्थ मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन फोरकास्टिंग वर्कफोर्स नीड. तो जो वर्कफोर्स नीड की फोरकास्टिंग होगी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर टू बी केप्ट इन माइंड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो forecasting therefore is the process of using both historical data, historical मतलब पिछले 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का डेटा, कि भाई कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी इन साल में, लेट्स से 2015 16 17 18 19 20 में कितनी थी, 19 तक कितनी थी, तो 20 का एस्टिमेशन है, उस बेसिस पे कर सकते हैं. हिस्टोरिकल डेटा उसी को कहते हैं जो पास्ट में बीत चुका है, उस डेटा को, मैन पावर के डेटा को एनालाइज करना. एंड प्रेडिक्टेड सिनेरियोज टू डिटरमाइन वर्कफोर्स नीड ड्यूरिंग अ स्टेटेड प्लानिंग पीरियड. प्रेडिक्टेड सिनेरियोज यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि पिछले इतने सालों में इस टाइप का टर्नओवर रेशियो रहा है या मैन पावर नीड इतनी रही है, तो एक्सपेक्टेडली अगर सब कुछ नॉर्मल है, इफ वी आर नॉट गोइंग फॉर एक्सपेंशन एंड ऑल, वी आर जस्ट नॉर्मली रनिंग द बिजनेस, सो वी कैन इजीली प्रेडिक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस दैट दिस विल बी द मैन पावर रिक्वायरमेंट इन 2020 बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल डेटा. Then during a stated planning period, following is a discussion of several forecasting method that are often used. तो ये जितने भी forecasting method है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. बस बेसिकली आप लोग यू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टूडेंट्स, दैट फोरकास्टिंग में बहुत सारे फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर. अभी बहुत सारे मेथड जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे तरीके होते हैं फोरकास्टिंग के. And there is no one sure shot forecasting technique, manpower forecasting techniques that is best or most suitable, because with the changing times, with the changing conditions or of the business environment that we are operating, we need to focus that which forecasting technique at a given point of time will be the most appropriate for our organization. और ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है. Then only we can accurately forecast our manpower can be forecasted more appropriately and accurately. Right? We will end here. Further, we will continue the discussion in the next lecture.